our aim is to find the surface tension of water by capillary rise method. To do the experiment, we require the following: retort stand, cork, wooden stand, beaker containing water, pointer, capillary tube, and traveling microscope. Place the beaker containing water on the wooden stand beside the retort stand. Pass the capillary tube through the hole of the cork until it is immersed in water. Water rises into the capillary tube. Now pass the long pointer through another cork in such a way that its tip just touches the surface of the water. The traveling microscope has the following parts: eyepiece, vertical main scale, vertical vernier scale, objective, horizontal vernier scale, and horizontal main scale. Now find the least count of the traveling microscope. Adjust the microscope by the anti-clockwise rotation of the screw placed in front of the microscope and pointed towards the capillary tube. Microscope alone is adjusted by anti-clockwise rotation of the screw in front of the microscope and then tighten it so that the water meniscus becomes visible. Focus the binocular using the screw so that the concave meniscus of water level is clearly seen. Rotate the fine adjustment screw in anti-clockwise direction to make the horizontal cross wire just touch the central part of the concave meniscus. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate H1 using main scale reading and vernier scale reading. Remove the wooden stand and the beaker. Microscope alone is lowered by anti-clockwise direction of the screw in front of the microscope, then tighten it. Rotate the tightening screw on the base of the microscope in anti-clockwise rotation. Then slide it over the main scale a bit. Place it in front of the pointer and then tighten it so that the tip of the pointer becomes visible. Rotate the fine adjustment screw on the top of the microscope in anti-clockwise direction so that the horizontal cross wire just touches the tip of the pointer. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate H2 using main scale reading and vernier scale reading. Calculate the capillary rise H using H1 and H2. Place the capillary tube horizontally on the adjustable stand and place the microscope in front of the capillary tube. Focus the binocular on the end dipped in water by rotating the left screw on the binocular in anti-clockwise rotation so that the inner circle is clearly visible. Adjust the fine adjustment screw on the top so that the horizontal cross wire rises up and touches the inner circle at B. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate the total reading. Record the total reading in a tabular column. Adjust the fine adjustment screw and make the horizontal cross wire just touch the inner circle at A. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Record the total reading in the tabular column. Move
the microscope on the horizontal scale by adjusting the fine adjustment screw on the bottom right of the microscope in anti-clockwise rotation. This causes the cross wire to shift to the left. Adjust the fine adjustment screw on the top so that the vertical cross wire rises up and touches the inner circle at C. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Record the total reading in the tabular column. Rotate the fine adjustment screw on the bottom right of the microscope in the clockwise direction. This causes the cross wire to shift to the right and makes the vertical cross wire touch the inner circle at D. Note down the main scale reading and vernier scale reading and calculate the total reading. Then find out the internal diameter and internal radius of the capillary tube. We can calculate the surface tension of water using the formula. Surface tension T is equal to R into H plus R divided by 3 into rho into G the whole divided by 2 cos theta. R is equal to 0.06 into 10 to the power of minus 2 meter. H is equal to 2.4544 into 10 to the power of minus 2 meter. Rho is equal to 1000 kilograms per meter cube. G is equal to 9.8 meter per second square and cos theta is equal to 1. The surface tension of water is equal to 0.07275 Newton. Hello friends, welcome to CBR. So friend, in this video I am going to discuss about the experiment to determine the surface tension of a given liquid at room temperature using stalkometer by drop number method. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से केमिकल हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरीन है, यहाँ पे टैप वाटर है इस बीकर में, और ये जो मेन जो हमारे पास डिवाइस है वो है स्टैल्कोमीटर। यहाँ पे हमारे पास एक मतलब छोटा सा पाइप सा पीस है जो कि यू शेप में है, और ये पूरी ट्यूब जो है ये ग्लास से बनी हुई है, और यहाँ पे इसकी रेटिंग्स वगैरह दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी। तो फ्रेंड्स चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम स्टैल्कोमीटर को लेंगे और इसको हम टैप वाटर में डालेंगे, और यहाँ से हम ऊपर से सक करेंगे इसे, ताकि हमारे पास जो मेन जो रीडिंग हो वो यहाँ तक आ जाए। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो हमने वाटर को यहाँ तक फिल कर चुके हैं, अब हम इसको ऊपर से रिलीज करेंगे और ड्रॉप इसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स अब हमने इस वाले बीकर में ग्लिसरीन लिया है, तो अब हम इसको सिमिलर तरीके से इसको दोबारा से हम इसको सक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इसको यहीं तक सक करेंगे पूरा ग्लिसरीन को, और उसके सेम रीडिंग्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करेंगे, जैसे कि हमने इन द केस ऑफ टैप वाटर किया है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स अब हमने इसको सेम टाइट्रेशन फ्लास्क में इसको अटैच कर दिया है, ताकि इससे ऑटोमेटिकली आता रहे। ये हमने यहाँ से ड्रॉप देख रहे हैं, ड्रॉप बार बार नीचे जा रही है, और ये हमने एक ग्लिसरीन का वही वाला बीकर रखा हुआ है, ताकि ये ग्लिसरीन वेस्ट ना हो और सीधा अपने बीकर में ही जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको, ये 5th वाली ड्रॉप है, ऐसे हम इसको काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उस नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया कि हमारे पास 60 ड्रॉप्स ऑफ
ग्लिसरीन है एंड 57 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारे पास इसका वेट मेजर करना। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस बीकर में छोटे से इसमें 50 ml ऑफ वाटर लिया हुआ है और इसमें हमने 50 ml ऑफ ग्लिसरीन लिया हुआ है और ये हमारे पास वेइंग मशीन है जिसमें हम इसको रख के इसका वेट मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये हमारे पास जो वाटर है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसका वेट देखते हैं। हमारे पास जो वाटर का जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 87.10 ग्राम्स एंड सेकेंड ये हम उसके बाद हम फिर जो ग्लिसरीन जो हमारे पास है उसका बीकर में डाल के 50 ml वाले बीकर में डाल के इसका वेट मेजर करते हैं और ग्लिसरीन का वेट हमारे पास आ रहा है 92.05 और 92.10 ग्राम्स। तो हमने इस हिसाब से मतलब इस तरीके से हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास एक स्टेप और आता है जिसमें हम सिर्फ वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, ये हमारे पास एम्प्टी बॉटल है, इसका वेट हम मेजर करते हैं कितना आता है। ये हमने ऑलरेडी इसको 0 पर सेट कर रखा है। एम्प्टी बॉटल का वेट हमारे पास 38.15 ग्राम जो आ रहा है वो एम्प्टी बॉटल का वेट आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक तरह से शीट वगैरह दे रखी है जिसमें सबसे पहले हमें रूम टेम्परेचर को नोट कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली हम 25 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर जितनी भी होगी वो मतलब 1 ग्राम पर ml और एनीथिंग जो भी मतलब हमारे पास एक्चुअल होती है इसको मान लेंगे। और फिर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 72.14 के आसपास आता है। और इसके बाद हमारे पास जो 3 रीडिंग दे चुके हैं हम उसकी लिक्विड और वाटर वाली, इसमें जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद इन तीनों के 3 रीडिंग ले लेंगे और उसका मीन ले लेंगे। मीन हमारे पास जो भी मतलब मेरे पास 60 आ रहा था ऑफ लिक्विड का मतलब ग्लिसरीन का और हमारे पास वाटर का 58, तो उसको हम मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद एम्प्टी बॉटल का वेट जो हमने ले चुके हैं ऑलरेडी 38.20 ग्राम्स हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक वेट जो हमने निकाला था बॉटल प्लस वाटर का वो हमारे पास आया था 87.10 के आसपास आया था और वेट जो आया था बॉटल प्लस ग्लिसरीन का वो आया था 92.10 के आसपास आया था। और तो एक्चुअल वेट ऑफ वाटर में हम उसको क्या करते हैं माइनस कर देंगे और वेट ऑफ बॉटल को माइनस करके निकाल लेंगे और फिर वेट ऑफ लिक्विड निकालना हो तो उसको एक्चुअल वेट जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला आया था बॉटल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉटल प्लस लिक्विड माइनस द वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ बॉटल कर देंगे। तो इसके बाद हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करना है तो उसके पास उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हम W1 W3 जो भी हम वो सब चीज़ें डालेंगे और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सरफेस टेंशन निकालना है तो हम उसके लिए भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे YL जो है हमारे पास वो लिक्विड की है और YW है वाटर की है डेंसिटी वो सरफेस टेंशन और ये हमारे पास डेंसिटी वगैरह है और ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो इस फॉर्मूले से फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो कि हमने इस पर ग्लिसरीन लिया हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अब तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक CBR को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस निकाल रहा था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग CBR। Here's another great example of how surface tension affects everyday things in life. One that we're all probably very familiar with is the soap bubble. Of course, as kids, we like to, maybe as adults as well, we love to make soap bubbles. And so what is the pressure inside a soap bubble? So we have pressure inside a soap bubble due to the surface tension of the surface of the bubble. Now, a soap bubble is different from a water drop in that it actually is a spherical shell that has an inner and outer surface. So the surface tension works along the inner surface and works along the outer surface. Now, of course, the coefficient of surface tension is less for soap bubbles because when you introduce soap with water, it lowers the surface tension. Now, what would be the increase in pressure inside this soap bubble? Again, the way we want to set that up is we say that the force to the surface tension is equal to the coefficient of the soap bubble, water, or water with soap in it, times the total length of the surface. Now, in this case, it will be twice the circumference of the soap bubble at the, when we cut it in half. And then also we could say that the pressure is equal to force divided by the area, which implies that the force is equal to pressure times area. So now what we can do is we can set the
force of the surface tension equal to the force caused by the pressure. So when we set those two equal to each other, we have gamma times L is equal to pressure times area. And since we want to know what the pressure is, we solve this for pressure. So pressure is equal to gamma L divided by the area. Now, gamma times L, remember L is twice the circumference of the cross-sectional area of the subbubble. So it would be 2 times 2 pi times the radius divided by the cross-sectional area, and again is the effective area. Notice that if we think of the bubble as being a semisphere when we cut it in half, and we have the pressure pushing down. Oh, that's not the right way of doing it. Where's my my eraser here? I was not doing this correctly. So what we want to show is that the pressure acts perpendicular to the surface everywhere inside the bubble, but in this case only the vertical components, let me use a different color, only the vertical components of these pressure vectors, if you want to look at that, there we go, only the vertical components matter in this case because they are perpendicular, they're in the same direction as the forces caused by the surface tension. And so therefore, we have what we call an effective area over which this pressure acts, which would be the cross-sectional area of the subbubble, not the dome-shaped area of the subbubble. So that means that for an area, we use pi r squared, because that's the effective area over which the pressure acts. Okay, now when we simplify this a little bit, we have a pi and a pi, we have an r, and this r cancels out. So finally, the pressure inside a subbubble is equal to 4 times the coefficient of surface tension divided by the radius, which in this case is 4 times 25 dynes per centimeters divided by the radius. In this case, we took a radius of 1 centimeter, so 1 centimeter, and that would therefore be the pressure is equal to 100 dyne per centimeter squared. If we then convert that to newtons per meter squared, we simply have to divide that number by 10, and we get 10 newtons per meter squared, which is, of course, a very, very small fraction of the atmospheric pressure. However, it's measurable, it's there. Now, if, of course, the subbubble gets smaller, the pressure will increase, and because then we have the ratio of the area to volume changes. It'll be a much greater surface area to volume ratio, and if there's more surface area, that means there's more surface tension, and therefore the pressure builds up. So if the radius was, for example, 0.1 centimeter or 1 millimeter radius subbubble, then the pressure would be 10 times as high, would then be 100 newtons per square meter. But that's how you figure out the pressure inside a subbubble. At tension sigma 700 and 701 measure the surface tension and the interfacial tension of a liquid by measuring the force the liquid places on a platinum probe. The fully automated measurement starts by the probe being immersed in the studied liquid. The system automatically detects the surface position, and after wetting, the probe starts approaching the surface gently with the help of an extremely precise lift. The maximum force is detected, and the One Attention software turns this force into the surface tension. There are multiple probes available, such as the most used de Noye ring, a traditional Wilhelmy plate, and a Wilhelmy rod for small sample volumes. Here, continuing with our lectures on surface tension, we now want to figure out how they actually measure the surface tension. If you're like me, you start wondering about a lot of things, and you say, how in the world do they do that? How in the world do they figure out what the surface tension is of a particular liquid, like water or mercury or anything else? Well, the way they do that is they take a very small, thin wire, they shape it into a circle shape, and then they attach some very thin wires to it so they can actually suspend it. And then what they do with that is that wire, they bring it down below the surface of a liquid, and then they start pulling in the opposite direction, measuring that force. And as they try to pull it out of the liquid, notice that the liquid will begin to adhere itself, because of the surface tension, all the way around the edge of that wire.
And as you pull, the surface tension will continue to pull more and more and more. The angle of the surface tension will get smaller and smaller and smaller until it gets to be 0 degrees. And then eventually you pop it through the surface of the liquid. At that moment you measure the force, you see it increase, you measure the force, and then by that you'll be able to figure out the surface tension of that liquid. So let's see how the equation works out. Again, the force caused by surface tension is equal to the coefficient of surface tension times the length. And since we're of course looking for the coefficient, we say that the coefficient is equal to the force divided by the length. Of course, the force is something that you measure, and the length, of course, is something that, well, I guess you measured it as well after you fashion that little wire. Make sure you get it correctly. But let's assume that the radius of that circular wire is 10 centimeters. Now, what is the length equal to? Well, again, if you think about it, if this is the wire, and here's the liquid that gets pulled up with it due to the surface tension like that, notice that this wire has two sides. Of course, here's the circular wire like that, right? It has two sides, so you have to take into account the inner and outer radius. So we have to take into account the inner surface and the outer surface of that wire. So it's twice the circumference of twice 2 pi r. So this is equal to the force divided by 2 times the circumference, which is 2 pi r, which means that the surface tension can be calculated by taking the force divided by 4 pi r. And that's how they determine the surface tension of various liquids. Ingenious way. As always, can't figure it out unless you're willing to set up an experiment and measure, but that's how they figure out the surface tension of particular liquids.